कि जिस तरह से ये बड़ा प्रोग्राम ग्लोबल समिट एटलेग होने वाला है, ये बेहद बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जहां पर 400 से ज्यादा ग्लोबल डेलीगेट्स होने वाले हैं। और इस प्रोग्राम में बहुत सारे विशेष मुद्दों पर बातचीत होने वाली है, जिन मुद्दों पर बातचीत होना लाजमी है, जरूरी है। जो प्रॉब्लम्स हैं लॉ की दिशा में, जिनको कैसे सुलझाना है, चाहे वो हमारे पेंडिंग केसेस हो या टेक्नोलॉजी को किस तरह से लॉ के अंदर लाना है, इन सब मुद्दों पे बातचीत होगी। इसी समिट के साथ इनॉग्रल सेशन जो 4 तारीख को हमने प्लान किया है सवेरे, उसके पश्चात एक स्पेशल सेशन होगा और उस सेशन में हम प्रोफेसर एस.आर. बंसाली नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन लॉ पार्ट 2 के जो 2 प्रमुख विनर हैं इस अवार्ड के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी और दोनों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया जाएगा, जैसा कि आपने बताया। तो ग्लोबल समिट एटलेग 2026 और प्रोफेसर एस.आर. भंसाली नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन लॉ, ये दोनों कार्यक्रम एक बड़ा संदेश भी है कि लॉ की जब भी बात होती है तो उससे जुड़ी समस्याओं पर भी बात होना जरूरी है, टेक्नोलॉजी पर भी बात होना जरूरी है। और so a very warm welcome from Rajasthan, Samvad, and we are here today with a great announcement of an amazing program which is going to happen in the world of law, that is Global Summit ATLEG 2026. And this summit is going to happen with 400 plus global delegates of Supreme Court, High Court judges, Vice Chancellors, CEOs, global experts, and whatnot. And this has been managed, this has been announced, this has been done by Galter, which is headed by Professor M.K. Bhandari. We are going to touch that topic. We are going to have all details about that topic. And also, this program is going to have Professor S.R. Bhansali National Award for Excellence in Law. That this is also very special, and we are going to have much more details about that. Also, we have with us is from Galter, Professor Dr. M.K. Bhandari, who tells himself a student of law, but he has taught many, he has contributed to law in terms of many things and many achievements he has taken. We also have Mr. Amit Pancholia with us from Calgary, Canada, and he is into technology. And we'll also take a brief introduction of himself from Amit sir. So let us go ahead and talk about this very special global summit ATLEG 2026. Sir, there is a huge news about ATLEG. Everywhere we are seeing on every social media that something big is going to happen in Hyderabad. And we are also, listening that many more people of law, many stalwarts of law are coming in this program. So, what all is going to happen? Let's hear from you, who is behind ATLEG 2026, Professor M.K. Bhandari. Thank you, Varun Bhansali, CEO of Rajasthan Samvad, one of the leading YouTube news channel of India. First of all, let me congratulate you and thank you for joining the ATLEG 2026 as our media partner. And here, I would like to briefly share with you about what this global summit is all about, what are the major themes and sub-themes, who are participating, and all these details. I must also welcome Amit Pancholia, who is currently heading India, USA, and Canada operations as a director of the Syntax company. And incidentally, he is currently in India visit, and he is leaving back today evening. So it's a very appropriate time that we have catched him, and we are also
going to learn from him the current and recent trends in technology. The ATLEG 2026 is about advanced technologies, law, ethics, and regulations and governance. So the Global Academy of Law, Tech, Education and Research, about which you already have recorded some programs, is India's unique academy which is working on the intersection of advanced technologies and the regulatory, ethical, and governance and policy issues. We are the only academy which has a global footprint. We have more than 200 plus members, which include, I am proud to say, judges of the Supreme Court, High Court. They are, of course, retired judges because, as we know, sitting judges, they do not become members of the uh, organization when they are working. So, retired judges, not only law professors, but technology giants like one Mr. Amit and many more, they are our members. And we have executed Memorandum of Understanding, MOU, with 28 institutions across the world in America, Germany, Italy, Mexico, Australia, several countries. And several law universities, notable law universities, are also our institutional members, and their vice chancellors are our members. So this Global Academy of Law Tech Education, popularly we call it as GALTER, has this time taken a giant initiative of organizing the mega global summit, which is scheduled at Hyderabad on 3rd, 4th, and 5th of April 2026. Incidentally, all 3 days are holidays, so it is easier for our guests and VIPs and delegates to come and participate. This summit is in hybrid mode. It means the delegates will join in person physically at Hyderabad for 3 days, or those who may not be able to join in person, they can join online also. We will share them all the details and program schedule and link to participate. I am happy to share with you that as of now, we have received confirmation from working judge of Honorable Supreme Court, uh, chairperson of the National Human Rights Commission, other judges from high courts of Karnataka, Andhra, Telangana, Rajasthan, who will be our guest of honors. There will be around 15 to 20 vice chancellors from different universities, not just law. Let me make it clear, Varun, that this is not a law conference. It is a interdisciplinary law and technology. The entire theme of Galter is interdisciplinary, or I may say multidisciplinary approach. In this summit, uh, it will be organized in one of the best five-star hotel in Hyderabad, which is run by Telangana Tourism. And its name is Hotel Plaza, Tourist Plaza at Begumpet area. That is the heart of the Hyderabad. And there will be 3 days. From 3rd, we will start. On 4th, we will have inaugural session. And 5th will be concluding session, in which the chairperson of Law Commission of India, Honorable Justice Dinesh Maheshwari ji, will be the chief guest, and many other VIPs will be the guest. So we have also received support from institutions, from top companies who are also supporting us in conduct of this summit. So I take this opportunity through your platform. I invite people from law and technology discipline to register. Registrations are open to register and participate. They can contact me via mail, and I can share all the details to them, and they can register. I would also be happy to tell you that large number of foreign delegates who are expert in their respective area, whether it is AI or
blockchain or metaverse or financial technology, they are coming in person, and few of them are joining online. So it's really a great event. One should not miss. If possible, join physically. If not possible, they can join online. We Over have seen to in the you, past Prof. also, sir, that Galter is always leading wherever law and technology talks are there. Uh, and Galter is regularly doing it, whether it is on social media or physically, or whether it is about involving global minds and having those fruitful discussions. And now, in this very huge and bigger platform, you also taking this one step ahead with all the foreign delegates, all the special entities, all the special people of their area and arena. So technology is playing a very crucial role, and we also have Mr. Amit Sir, who is leading cloud infrastructure and OCI practice modernization of enterprise workloads. Sir, technology is uh, growing up like anything. What do you think that law and technology hand in hand, if they goes and a platform like Galter is regularly, promoting it, how necessary it is for legal people who are getting law to every, who are taking it ahead to get it with technology also, how necessary it is. Right. So if you see, the technology nowadays is evolving very rapidly, and in every area you are seeing the automation, the AI is playing the very important role there, and it has become the central to like how business can operate and can innovate. So even in that area, if you see in the law area, like you need to have a lot of reforms are going to come, and you need to have all the laws in place for the technology. Now companies are using this technology for automating the process, for gaining the better insight from the data, and also to scale up their operations and the innovation. Now, in those cases, if you see the AI driven technologies, the stronger cybersecurity is required. And then, apart from that, you need to have a strong law in place so that these technologies are not misused. So, it goes hand in hand for the technology and the law to play a important role in our daily lives now. Right, Yeah, very true. Mr. Amit, And I may just somewhere, add you. yes, sir, you were saying. I may just add a footnote. India also has recently enacted the Digital Data Protection Act to ensure the privacy and integrity of the individual data, which is shared in large volume for e-commerce, in banking sector, in healthcare sector. And I'm happy to share that I have written a book on DPDP Act, which is perhaps the first major publication. And my another publication on advanced technologies, law and regulation is in the process. And hopefully we will get that major book released during the summit. That work is also going on. This is just by way of some addition. Over to Right, you. right. And we all know that Professor Dr. M.K. Bhandari is very vocal about technology in law, and technology has to be there in place wherever, reforms has to take place. And law, people of law should also take technology ahead. This is always been promoted by Professor M.K. Bhandari. सर, हमारी हिंदी ऑडियंस के लिए भी हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह से ये बड़ा प्रोग्राम ग्लोबल समिट एटलेक होने वाला है, ये बेहद बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जहां पर 400 से ज्यादा ग्लोबल डेलीगेट्स
होने वाले हैं। और इस प्रोग्राम में बहुत सारे विशेष मुद्दों पर बातचीत होने वाली है, जिन मुद्दों पर बातचीत होना लाजमी है, जरूरी है, जो प्रॉब्लम्स है लॉ की दिशा में, जिनको कैसे सुलझाना है, चाहे वो हमारे पेंडिंग केसेस हो या टेक्नोलॉजी को किस तरह से लॉ के अंदर लाना है, इन सब मुद्दों पे बातचीत होगी। बट एक स्पेशल स्पेशल प्रोग्राम उसमें और होने वाला है, जो होने वाला है प्रोफेसर एसआर भंसाली नेशनल अवार्ड फॉर लॉ, एक्सीलेंसी इन लॉ, जिसका एक अध्याय 2 साल पूर्व हो चुका है और अब दूसरा अध्याय होने वाला है, जिसके विनर्स भी काफी जद्दोजहद से चुने गए हैं। और वो प्रोग्राम कैसे होगा, कितना भव्य होने वाला है, एटलेग में इस प्रोग्राम का होना कितना बड़ी बात है, इस सब पर भी थोड़ा सा सर प्रकाश डालें। बिल्कुल ठीक कहा आपने वरुण कि इसी समिट के साथ इनॉग्रल सेशन जो 4 तारीख को हमने प्लान किया है सवेरे, उसके पश्चात एक स्पेशल सेशन होगा। और उस सेशन में हम प्रोफेसर एसआर बंसाली नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन लॉ पार्ट 2 के जो 2 प्रमुख विनर हैं, जो इंडिया के लीडिंग लॉ स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर सी राजकुमार जो कि जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और इंडिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाले वाइस चांसलर हैं, और दूसरे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर जीएस वाजपेयी जी हैं। इन दोनों को हमारी जूरी ने, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस AK सीकरी सर थे, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी जो जिनका नाम ही काफी है वो थे, जब प्रोफेसर जायसवाल जो प्रीवियस अवार्ड के विनर थे, मैं था, और प्रोफेसर बंसाली साहब के बड़े सन डॉक्टर अनिल बंसाली थे। हमने करीब 3-4 महीने की मेहनत के बाद, मीटिंग्स के बाद, इन 2 नामों को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड के लिए चुना और उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। और माननीय सीकरी साहब, माननीय उपेंद्र बख्शी जी, जायसवाल जी, ये सब उपस्थित रहेंगे और उनकी प्रेजेंस में और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश की प्रेजेंस में ये अवार्ड हम इन दोनों महानुभावों को, दोनों विनर्स को देंगे। पिछली बार हमने, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने जयपुर में बहुत भव्य कार्यक्रम किया था और विनर प्रोफेसर जायसवाल थे। इस बार हमारे सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी, इतने हमारे सामने कैंडिडेट्स थे और फाइनली जूरी ने काफी डिस्कशन के बाद इन 2 नामों को इस अवार्ड के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी और दोनों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया जाएगा। जैसा कि आपने बताया, इस अवार्ड में हम 1 लाख रुपए की राशि, जो कि बंसाली ट्रस्ट देता है, जिसकी स्थापना आदरणीय प्रोफेसर श्रद्धेय एसआर बंसाली साहब और उनकी धर्मपत्नी के नाम से की गई है, उनकी तरफ से ये राशि दी जाती है 1 लाख रुपए की। तो ये राशि दोनों विजेताओं को दी जाएगी और इसके अलावा उनको और सम्मान पत्र और दूसरे सम्मान दिए जाएंगे। और मैं मानकर चलता हूं कि इस कार्यक्रम में आप, जो कि प्रोफेसर बंसाली साहब के बहुत लाडले पोते रहे हैं, सम्मिलित होंगे। डॉक्टर अनिल बंसाली जी और आपके फादर, अंकल सभी सम्मिलित होंगे। मैं सबको आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और निश्चित रूप से इस समिट के साथ इस अवार्ड सेरेमनी का होना एक विशेष महत्व रखता है। तो हम लोग सभी बहुत उत्सुकता से इस बात का इंतजार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रोफेसर एसआर बंसाली साहब के मार्गदर्शन में मैंने PhD की और करीब करीब 25 साल तक उनके गाइडेंस में मैंने अपनी सेवाएं दी और उनकी मेरे पर विशेष कृपा अनुकंपा रही। और उनके सम्मान में अगर कोई भी कार्यक्रम हो तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है। पूर्व में भी हमने एक फेस्ट शिफ्ट का पब्लिकेशन किया था और फिर ये अवार्ड हमने ट्रस्ट ने लॉन्च किया और हमने इसको सफल अंजाम दिया। ये 2nd अवार्ड है, फिर 2 वर्ष बाद 3rd अवार्ड भी होगा। तो मैं बहुत इसको लेकर उत्साहित हूँ और हम सभी उत्साहित हैं कि इस समिट में इस अवार्ड को
प्रेजेंट किया जाएगा। तो ग्लोबल समिट एटलेग 2026 और प्रोफेसर एसआर भंसाली नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन लॉ, ये दोनों कार्यक्रम एक बड़ा संदेश भी है कि लॉ की जब भी बात होती है तो उससे जुड़ी समस्याओं पर भी बात होना जरूरी है, टेक्नोलॉजी पर भी बात होना जरूरी है। और जैसे मैं समझता हूँ प्रोफेसर भंसाली भंडारी जी, कि प्रोफेसर डॉक्टर एसआर भंसाली भी हमेशा यही चाहते थे कि लीगल स्टडीज को इसी तरह से बड़े मंचों पर बातचीत पे ले जाया जाए और वही काम अनवरत बिना रुके आप लगातार करते जा रहे हैं। तो ये अवार्ड फंक्शन तो प्रोफेसर एसआर भंसाली की यादों में एक बात है ही, प्लस उससे के साथ साथ जो एटलेग भी है वो भी जो वो सोच रखते थे उसी कड़ी में एक बड़ा कदम है। अंत में इस निश्चित। पूरे इंटरव्यू के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जीते जी तो अपने गुरु के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन गुरु के इस दुनिया से जाने के बाद भी अनवरत लगातार उन्हें जिंदा रखने का काम, उनके उन प्रयासों में, जिन प्रयासों में वो लगातार करते रहना चाहते थे लॉ के लिए काम, वो करते रहना कोई छोटी बात नहीं है। और प्रोफेसर डॉक्टर एम के भंडारी भारत की इस गुरु शिष्य परंपरा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे हैं। ये कार्यक्रम भी उसी का एक छोटा सा नजराना नमूना है। थैंक यू सो मच। ये मेरा सौभाग्य है वरुण, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे प्रोफेसर एसआर बंसाली साहब जैसे गुरु मिले, मार्गदर्शक मिले। मैं उनको उनके सामने ही कहता था कि सर यू आर माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो ये मेरा परम सौभाग्य रहा, और उनके स्मृति में अगर जो कुछ भी हम कर पाए वो कम है। उन्होंने जो विधि शिक्षा को और विधि जगत को जो योगदान दिया उसको शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। मुझे इस बात की भी आज खुशी है कि डॉक्टर मिस्टर अमित पंचोलिया आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और मैं वैसे भी उनको इनवाइट किया, वो खुद कार्टर के मेंबर हैं। तो वो इस कार्यक्रम में वापस 1 महीने से भी कम समय बचा है अब तो कनाडा से, कैलगरी से लौटकर आए, सम्मिलित हों। और अगर किसी कारण से संभव नहीं हो पाए, मैं जानता हूँ अभी वर्तमान की परिस्थितियाँ भी काफ़ी उथल पुथल है, तो कम से कम आप और आपके साथी लोग, कंपनी के लोग ऑनलाइन अवश्य भागीदारी करें। और मुझे खुशी होगी अगर आप व्यक्ति से आएंगे, प्रयास करें। मेरी शुभकामनाएं आपको, और वरुण आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम लोग जल्दी ही हैदराबाद में मिलेंगे, और एक भव्य कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है और आप सबका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।